don't give so much attention to all the uncles. बुढ़े सठिया जाते हैं उस उम्र में. मुझे भले ही इंटरनेट पे गाली मिलती हो, सामने से मरते हैं सेल्फी के लिए. There is no place I'd rather be than India. सभी नंगे घूमते हैं मुंबई में. I want girls to take my example. मम्मी उर्फी जावेद जैसा तो नहीं है ना. He did DM me asking me, "So beautiful, how are you? You look so pretty." मेरी वो फ्रेजाइल होती है. We're very excited today. I think the whole team at Yuvaa is आज हलचल मची हुई थी ऑफिस में because we have among us someone all of us are really inspired by that we find very very cool, very very authentic and obviously one of the most unapologetic people in our country. We are very happy and privileged to have Urfi Javed with us today. Thank you so much, Urfi, for being part of our Baatcheet session. Thank you for having me. I feel like there are men and then there are uncles, and I feel like a lot of the stuff that I hear, about you in the media actually comes from uncles. It comes from these people who believe that they can, ये बुढ़ा मेरे बीच में बहुत बोलता है. वही ये लगता है मुझे कि जो ना हमेशा ना सोसाइटी के अंदर भी होते हैं, बाहर भी इन प्लेसेस ऑफ पावर भी होते हैं जो सारे बैठकर बोलते हैं कि लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए और लड़के ऐसा कर सकते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये क्या कर सकते हैं इसके बारे में? वी आर अपेरेंटली द कुछ नहीं, इनके मरने का वेट करो. हम इनका कुछ नहीं कर सकते. अंकल को अभी क्या उनको सिखाएंगे यार, उनकी उम्र निकल गई, सीखने को सीखना चाहते ही नहीं है. जो बंदा चेंज होना नहीं चाहता उसको नहीं चेंज कर सकते हो. फक इट नाउ. It's a great answer, I would say. Because you, I see, obviously call out a lot of people. You're not afraid of that, चाहे कोई भी किसी भी position पे होगा, you speak up, right? And you speak your mind, which is the inspiring thing about you. Do you think does that change things in some way? What do you think? What is your rationale कि मैं ना किसने मुझे कुछ कह दिया और I'm going to respond? I just want to take a stand for myself. That's it. And sometimes I don't. कभी-कभी क्या होता है ना, कुछ लोग बोल देते हैं just for publicity. Yeah. So that I ignore. Like Chetan Bhagat. नहीं, उसने publicity के लिए नहीं बोला था. I think उसके मुंह से निकल गया था because he doesn't have any respect for me and any respect for what I do. So he feels it's okay to disrespect me because of the kind of clothes that I wear. So I spoke up against him. मैं तो उसके चैट्स वैट्स डाल दिए थे स्टोरी पे. मैं क्या ही बोलूं, मैं तो लगा रही थी उसकी. कभी कभी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि तू आईना दिखाना. It's just important to show them the mirror. Yeah. When it comes to clothes, when it comes to body shaming, when a boy or a girl wear the same things, girl might be sexualized, but the boy may not be. ये क्या कपड़ों को लेकर, and of course you faced so much of this. आप जब if you had to say something to society or say something to not just men but everyone around you. Because women are sexualized more. मतलब लड़कियों के साथ कुछ गलत करना इजी होता है, लड़कों के साथ शोषण करना इतना इजी नहीं होता है. इंडिया में कितने रेप केसेस हैं आदमी के अगेंस्ट और कितने रेप केसेस हैं औरत के अगेंस्ट. बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है. तो ऑफ कोर्स वुमेन आर सेक्सुअलाइज्ड मोर, क्योंकि इज्जत भी एक औरत की वही रखी हुई है हम सब में कि अगर एक औरत का रेप होता है तो वो गलत है, रेपिस्ट उतना गलत नहीं है. तो ये तो बहुत लंबे टाइम का सेक्सुअलाइजेशन है, इसमें तो अभी टाइम लगेगा, कोई कुछ कर नहीं सकता है इसमें. It is women who are less afraid of being honest as compared to men. आपको क्यों लगता है कि आदमी ऐसे क्यों नहीं बोल पाते versus आप जैसे बोल पाते? अनअपोलोजेटिक होने की जरूरत नहीं है because the issues are not affecting them. Sure. और हमारे पास ऑप्शन नहीं है. If we don't speak up, the issues will affect us, which हमें बहुत सालों से affect हो रहे थे. So we need to speak up. They don't need to speak up. If they do well and good, हमारी तो need है ये. I'm very curious to know, Urfi, आप जब किसी को whether it's on your stories or comments or anything in public, अगर आप किसी आदमी को call out करते हो, have you ever seen anyone changing? Have you ever seen that someone responding and saying I'm sorry, I think? No one has ever apologized. No man has apologized. No. Why do you think that is? Male ego fragile होती है. There was this hockey player who I don't know who said किसी page के उस पे नीचे उसने comment कर दिया था. There was this rumor that I'm in Dubai jail, whatever. So he commented अच्छा है दुबई की पुलिस ने इसको. He's a national hockey player.
दुबई की पुलिस ने इसको पकड़ लिया, इंडिया वापस मत भेजो, ये वो. So I'm like, oh, really? I put up a story. You didn't have the same thoughts about me when you DM'd me few months back. He's like, I never DM'd you. कैसे? Then he gave interviews about me. उर्फी झूठ बोल रही है. मैंने इसको कभी DM नहीं किया. I just posted the screenshot. Bitch, now tell me. He never DM'd? Okay. And then, but he never apologized. He did DM me, asking me, "Sub beautiful, how are you? You look so pretty." But see, even after posting all that, he never apologized. Ego, or kya? At least for the young generation, some people, I'm not saying everybody, whoever in the young generation is in that toxic phase of not understanding gender or treating women in a certain way, what would you advise कि क्या मतलब whether to people around them or to them directly कि किस तरीके से लड़के young boys can do better or learn more, what can be done? मैंने बोला ना, charity begins at home. Ask your mother, ask your sister, what are the changes you want? आपके साथ हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं, और ऐसी क्या ख्वाहिशें हैं जो हमारी वजह से आपने दबाई हुई हैं. क्यों आप मतलब खाना परोस के फिर खाती हो, क्यों घर का काम आप ही करती हो. सो चैरिटी बिगिंस एट होम भाई. अपनी बहनों अपनी माँ से जाके पूछो, फिर बाकी लोग का देखो. I think you are an inspiration to many men as well because of how honest you are. And मैं आपसे एक्चुअली क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ, विद ऑल द मेन दैट अराउंड यू, इन योर लिव्ड एक्सपीरियंस जो आपने देखे हैं, क्यों उनका मुश्किल होता है प्रोग्रेसिव होना? आदमी भी टॉक्सिक होते हैं बट वो कर नहीं पाते, शायद वो जंप नहीं ले पाते. क्यों लगता है? I've had some progressive men in my life. My brother, he is very progressive. The guy I was dating, he's still my very close friend. He's very, very, very progressive. So I don't feel कि ऐसा नहीं है कि आदमी प्रोग्रेसिव नहीं होते हैं. अब कुछ जो नहीं होते हैं ना, उनको उनकी सराउंडिंग ही वैसी, उन्हें शायद कोई सिखाने वाला नहीं है. सो मे बी दैट्स द रीजन. हम चाहे जितना यहाँ कैमरे के पीछे बोल रहे, उनके घर वाला, उनका आस फ्रेंड्स, दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विद देयर फ्रेंड्स, सो दे कंपनी मैटर्स. सो आसपास के लोग, यू नीड टू चूज वाइजली द पीपल यू आर स्पेंडिंग योर टाइम विद. मतलब वही बात होगी. और घर पे भले ही आपको नहीं सिखाया जा रहा है, पर आप बाहर सीख सकते हो चीजें. सो एवरीथिंग इज कॉन्शियस डिसीजन. जो आपके पॉजिटिव मेन हैं इन योर लाइफ, व्हाट इज समथिंग दैट यू आर लर्निंग फ्रॉम देम एज वेल? क्या आप सीख सकते हो उनसे? पेशेंस मेरे अंदर नहीं है, तो वो पेशेंस एक चीज है. मतलब क्योंकि लड़कों के साथ भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, हद से ज्यादा. मतलब प्रेशर होता है कमाने का, यू नो, बट you just see them sometimes silently going through it all without sharing it. तो patience तो मैं जरूर बोलूंगी. And anything that you feel like men should learn from you? नहीं, बहुत है सीखने को. ऐसा क्या भाई भी नहीं, बट आई फील हर किसी की लर्निंग लाइफ में अलग है. Sure. मतलब हर किसी का लाइफ में गोल ही अलग है, तो योर लर्निंग शुड ऑल्सो बी डिफरेंट. नॉट एवरी मैन शुड लर्न फ्रॉम मी. किसी और से सीखना है, किसी और से सीख लो, पर सीख लो भाई दो चार अच्छी चीजें, मुझसे नहीं तो कहीं और से. Love to know, are there any men in media, in the public that you want to give a shout out to? I like Ranveer Singh. Yeah. He's just too cool about his sexuality, and I like that part about him. He doesn't look like a toxic guy, that's all. He's never said wipe that off to Deepika. He's like, tu chill kar yaar. So that's just very cool about him. I've never met him, but I've seen like whenever he meets anyone, he's very warm, he's very nice. Yeah. So I think he's good. We have a small thing that we do at the end. So it's a pouch, it's a compliment pouch. You'll have to open it. These are messages or comments that have been put on your Instagram by young women, you know, and who really look up to you. And yeah, we'd love for you to read them out and react to them. Sushmita Day. I don't know why people do so much criticism. When this same type of fashion is shown in gala, the same people just appreciate that. What's wrong with this? When some Indian is showing something so creative. Oh my gosh, she has like 5,000 likes on the comment. What the fuck, Sushmita? She's go girl. Do you think this is true? Like we judge Indian women and you know international women with different standards? Yeah, of course. Yeah? ये तो है, मतलब this is obvious. Really? These things don't even. हमारा है थोड़ा सा इंडिया में, मतलब हमें आज़ादी को भी 100 साल भी नहीं हुआ, उन्हें हो गया है टाइम, तो ये भी एक वो रहता है. तो they have
they've gotten more time. Yeah. Half of y'all are afraid of being yourself because you're scared that people might judge you. At least she's not pretentious. So true. She's a brave girl. It takes a lot of courage to do what she's doing. Just because she doesn't dress up the way you all want her, doesn't make her a bad person. It's true for every girl. Yeah. Just because a girl isn't dressing up the way you want to doesn't make her a slut. I don't do ki Indian men are this, Indian. Okay. Yeah. But the fact that I love staying in India, there is no place I'd rather be than India. It's very sweet. I'm shocked to see these comments. So why is it so shocking? I don't read all of them. I don't read comments actually. I don't use a lot of. I upload and then I stay away from social media. Like I'm not into Instagram a lot. But all these are you aware that there is a lot of young people who actually look up to you? No, I don't see comments. मतलब बहुत time से मैं बस Instagram पे जाती हूँ, upload करती हूँ और log out. I don't even log in for days and I'm very happy. Sure. Like very happy. Do we have here all these young women over here? Does anyone have a question for Urfi? But really admire it. Thank you. That's so sweet. Thank you. The whole question is really nice. So now you know about the uncles. बस मरने का wait. They don't give so much attention to all the uncles. बुढ़े सठिया जाते हैं उस उम्र में. मैं नहीं ध्यान देती इतना. उम्र तो इसीलिए अंकल की बातों पे ध्यान नहीं देने का. Like all your रिश्तेदार all time like सठिया गया है बुढ़ा. बोलने दो इसको. So I'm asking myself, how do you deal with the perception when you meet someone new for the first time? A lot of people would obviously judge you based on the perception of who they see as Uorfi Javed on Instagram. So do you ever have a moment where you feel कि काश मतलब मैं I could just go up to someone and be like, hi, I'm Urfi, tell people this is who I am rather than being यार with that. पता है सलाम ना उगते हुए सूरज को ही किया जाता है. मानो ना मानो मुझे भले ही इंटरनेट पे गाली मिलती हो सामने से मरते हैं सेल्फी के लिए. है जो है सच है भाई. सामने आके कोई नहीं बोलता ये क्या पहना है क्या पहना है. मतलब एक आध भी जो बोल देते हैं वो भी सेल्फी लेनी. एक जो बुढ़ा आया था मेरे पास एयरपोर्ट पे कि क्या पहना है संस्कृति खराब कर रही हो. ही केम बैक रनिंग फॉर अ सेल्फी. कैन यू बिलीव दैट? I can't. Wow. कोई फर्क नहीं पड़ता है. एंड मैं जब भी किसी से मिलती हूँ आई थिंक आई एम वेरी ऑसम. आई एम अमेजिंग. इट्स अ प्लेजर दैट दे आर मीटिंग मी. देयर प्लेजर दे आर मीटिंग मी. हमारे तो भाग बन गए हैं. सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन आई मीट एनीवन. आई डोंट हैव एनी सच थॉट्स कि इसको क्या सोचता होगा मेरे बारे में. नहीं सोचता होगा. सोचे भाई मेरा घर कोई नहीं चला रहा है. मुझे भी ऐसे ही घर में बड़ा किया है जहाँ पर शॉर्ट्स और कैपरीज भी नहीं पहने देते थे. लेकिन मेरा मन करता है कि मैं कभी ड्रेस पहनने की कोशिश करूँ या कुछ स्लीवलेस पहनने की कोशिश करूँ और बाहर जाऊँ. तो क्या आप मुझे कोई करेजियस या अप्रिशिएटिव नोट दे सकते हैं कि मैं एक जाके ड्रेस. You look beautiful, man. Why not, girls? Take this thing up and dress her up. No, like someone should take this and just dress and you be confident. सभी नंगे घूमते हैं मुंबई में. कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे. और देख लेना मेरे पिक्चर देख लेना. ये मम्मी को दिखा देना. ये देखो इतनी नंगी घूमती है. मैं तो कुछ भी नहीं पहना है. मतलब मेरा तो इससे सही है ना. Just take my name. I want girls to take my example. मम्मी उर्फी जावेद जैसा तो नहीं है ना. Do it. दिखा दो. And यार parents also, you know, we need to understand कि वो भी बेचारे इतना वैसे ही पले बड़े. So you have to meet them in the middle way. Start with capris, then धीरे ना ठीक है यार ठीक है. You have to go slow. एक साथ नहीं बिकिनी पहन के आना है. Awesome. Well, thank you again, Urfi, for being here. As you can see, the girls seem very inspired. I hope so. We expected that, but again, I must say, it's all genders. It's not just women. We are all inspired by you. Thank you for making time, and thank you for using the voice that you are using in such an incredible way.